Good morning. We'll begin our class today. For today's class, we'll look at writing letters and writing a report. In the previous class, we completed summarizing, paraphrasing, note making in Unit 3. And for today, we'll begin with letter writing as well as report writing. Letter writing and essay writing. Um, Unit 3 in letter writing is divided into two parts. First is formal letter, the other is informal letter. If we'll read what is given in the study material, if we come to what is written in the study material, if you guys have it with you, you'll see that the first line itself specifies that that letter writing can be divided, or letters can be divided into three parts. That is letter, formal letter. Second is semi-formal letter. The third is informal letter. Semi-formal letter is also informal in nature. Your formal letter is proper official letter that is you utilized for the purpose of official communication. As we studied in our first class itself, that our levels of communication is divided into organizational communication, communication for the purpose of interpersonal building interpersonal relationships in social or personal context. This these levels of communication also apply to when we are writing, specifically when we are communicating, officially communicating through writing. Your formal letter, your informal letter is a letter which is personal in nature. It is written to relations, to relatives, to friends, etc. And it is free of all the formalities. What do we mean by it is free of all the formalities? The structure, the language of it is personal in nature. It is lively. It is simple. It carries with it a tone of expressing yourself. In a personal context, in a personal context, and by this in personal context, which is clear to us as we get into the a word itself, that it's in personal context, is that you are able to express yourself in terms of how you are feeling. You can ask the other person how the other person is feeling. You may tell something personal about yourself in that letter. So the format for that letter, the informal letter, is the first comes your address, the writer's address at the top. The format follows the left margin, so we are going to strictly follow the left margin. In your exam, you can also make a box for writing a letter. Um, we are going to follow the left margin, and we'll begin with writing your address, the writer's address. Then comes the date when the letter is being written. Then comes the salutation after the date, and finally the body and signature of the letter. Now this is an example format, and as well as an example of informal letter. First comes the address, the person who is writing, the address of the person who is writing, the writer's address. Then you leave a line, comes the date on which you are writing. You leave a line, then comes salutation. Now, again, I'll come back to that. It has a personal tone to it. We may use Dear Sujata, address the other person as to what relationship we share with that person. For example, mother or a father, papa or mama or bhai, or to a friend, where you can begin with Dear Sujata, Dear XYZ. Then the body of the letter. The left margin rule applies to when you're writing the writer's address, the date, salutation, as well as your signature. But when we begin with the body of the letter, you have to indent the first line of your paragraph a bit um, towards the right. Um, and also, please make a box when you're writing the letter. The first paragraph in your informal letter is, the format is not, you have to keep in
you have to particularly take care of that. You have to follow the format strictly, but the body of the informal letter is quite flexible. uh, it is flexible in this that your introductory paragraph may begin with um, whatever you want to state, and that may not be as coherent in terms of that my introductory paragraph should be an introductory paragraph the way it is an introductory paragraph in academic writing. It could be you can begin the introductory paragraph what in whichever way you like. Then comes the middle part of your letter, that is the second, third paragraph of your letter, where you can further elaborate as to the purpose you are writing the letter, as to elaborate on the purpose for which you are writing the letter, or you may share whatever you want to share in that letter. You may express yourself in whichever way you like. Then comes the conclusion of the letter, and you may conclude by wishing them well, or you may conclude by um, uh, you know mm, inviting, or if let's say you are thanking them, or if you are um, visiting them soon, you may end the letter. So then comes the signature, the closing remark and signature. Now in your formal letter, you this is something that you might be aware of, that in your formal letter we do not end our letter with by. In informal letter, the we can end the letter with yours affectionately, by, with love, all the best, take care. These terms are not used, or these closing terms are not used in your formal letter. And finally comes the signature. Now comes the formal letter. Now a formal letter is a letter which is for the purpose of official communication, for the purpose of formal communication. Hence the language of the letter is also formal. First comes the writer's address. The format is first comes the writer's address. You leave a line, then comes the date. Begin with making a box. Make a box, and if you're not making the box, please follow the margin, or your address, date, your subject, salutation, all of it should follow the margin. Only the body paragraphs, the paragraphs of your letter, the first line should be slightly indented towards the right. Apart from it, you have to strictly follow the margin. We have to keep in mind that this is for official purpose, for formal communication. So it has to be more concise in comparison to informal letter. It has to be more precise, concise. It should clearly state the purpose as to why you are writing, who to whom is this letter addressed, for what purpose is this letter addressed, why you are writing this letter. And it cannot be as long as your informal letter. Informal letters are generally quite long, but your formal letters cannot be long. It, you have to keep it precise, you have to keep it short, you have to keep it direct. So first comes your writer's address, then comes the date, then comes the recipient's address. Writer's address is the address of the person who is writing the letter. You leave a line, comes the date, then you leave a line, comes the address of the person you are writing the letter to, then comes the subject line. Then comes the subject line. As to what subject is, a short um, line, or a short sentence which gives the reader of the letter a clear idea about what the letter is, uh, what is the content of the letter. So your subject line has to be the crux of your letter, the central idea of your letter, the main purpose of your letter. Your subject line should state the subject, the idea, the reason why you are writing the letter in one line.
It shouldn't be long. Then comes your salutation. Your salutation is, of course, the person greeting the person. Um, Now, there are certain rules as to how we greet a person when we are writing a formal letter. You can use sir and madam usually when you are interacting for the first time. So, respected sir, respected madam, or simply sir and madam, comma. I'm talking about the salutation. Then, dear sir, dear madam, only if you are acquainted with the receiver. If you're acquainted with the receiver, you may use dear sir, dear madam. Um, but for the first time, if you're interacting with with the person for the first time, avoid using dear sir, dear madam. But if you're acquainted with the receiver, um, it's, let's say, your second or third interaction with the receiver, you may use dear sir, dear madam. Um, then comes the body. Okay. Then comes the after the subject line salutation comes the body of the letter. The first paragraph of your letter, in which the first line of the paragraph has to be slightly indented towards the right, should be the introductory paragraph. The introductory paragraph should introduce the purpose of your writing. Your introductory paragraph cannot be about anything else other than introducing the purpose of your writing. So there could be two contexts in which you may have to write your introductory paragraph. The first is that you are you have already written a letter and you are referring to that letter. Okay. So this is to be mentioned in your introductory paragraph. If this is your first letter and you are writing it referring to, let's say, a um, advertisement or a, a particular policy or XYZ. So you also have to mention that. In your introductory paragraph, you have to state the purpose and refer to, um, let's say, a policy or a previous letter if it is required, so on and so forth. Now, your second paragraph should give information to the reader. Your introductory paragraph introduces the reader or the person who to whom you have written that letter, the purpose of why you are writing the letter. Your second paragraph should give information related to your purpose to the reader. So you may either state certain actions. Let's say you're writing a letter to the editor. You're writing a request letter or a complaint letter, order letter, sales letter. So your second paragraph in following that, uh, it is this particular type of letter should give information required. So let's say it is a request letter or it is a complaint and prevention measure request letter, as is also given in your study material. If we come to the question that has been given in your study material in the practice exercise section, um, write a letter. Write a letter to your mother, to the chief minister, stating the ways in which he should try to deal with air pollution in Delhi. This is the question that has been given. Um, so, in such a case, there is this example I would like to give to you. Um,
Okay, so there was this letter written in 2020 to the Chief Minister, and you may find it online, to the Chief Minister, to cure, to suggesting measures as to how to prevent pollution, and asking or requesting also to take into consideration that so this is the letter. I hope it is visible to you. So please look at how the body paragraphs have been constructed. Now, the subject line of the letter. You are going to follow the format that has been specified. So the format is right here. Um, you'll have to see to it that your first of all, everything will be following the left margin of your page. Make a box if you find it is more it is better. You may also make a box. If you're not making a box, you have to follow the left margin. um, on You'll begin with writing the writer's address, then comes the date, then comes the recipient's address, then comes the subject line, finally the salutation. Now coming to the practice question that has been given in your study material, that write a letter to the chief minister stating the ways in which he should try to deal with air pollution in Delhi. In such a case, in such a question in your exam, um, this could be your uh, this is one example on how to write your subject line in such a letter. Request to take constructive action for preventing any massive rise in Delhi's air pollution following the recent downfall in AQI levels, thus ensuring a healthier Delhi for all its citizens. Honorable Chief Minister, right? Now, this is a proper official communication, and if you are asked in your exam to write a letter to the Chief Minister, um, or to the principal of your college. So please use proper addressals, such as do not write dear sir, dear madam. You can use respected sir, respected madam. In this case, the person who is writing the letter has used honorable chief minister. The first paragraph states the purpose of the letter. I am writing this letter to you in order to express my views regarding the need for permanent reduction of air pollution levels in Delhi. So the first paragraph itself states the purpose. Now the body paragraph has been divided into few small paragraphs, which can also be the way so that it is easier on the eye of the reader on how to write a formal letter, so that it is easier to read. Long paragraphs can be quite tedious, and specifically if it is for the purpose of formal communication, and such as letter writing. Mm, this small paragraphs also help in clearly stating your purpose and giving information. So you can also use this style of writing in your um, for your letters, for your formal letters. So the first paragraph states the purpose as to why the letter is being written. Um, I'm writing this letter to you to express my views regarding the permanent reduction of air pollution levels in Delhi. Okay. Then the second paragraph, third paragraph, fourth paragraph, if you'll read it, gives information as to what the person has is talking about. That the AQI levels have recently fallen down, and from where is this data coming from where is this data coming to this person? He has stated that I got this data from the Indian Express. So everything that the person is communicating, the information that is being communicated in uh,
in a context where you are suggesting preventive measures. Please keep in mind that this letter is also not just a letter of complaint where, let's say, you have written the letter to the municipal corporation or letter written to um, to ask for leave, requesting leave uh, uh, from college. Or so this is a letter that is also suggesting measures, preventive measures. So the person begins it in somewhat a same way of citation that we may follow in our essays. That is, Delhi records cleanest air in August since 2015. The AQI in the city on Monday was 41, which is considered to be in the good category, ranging from 0 to 50 in the past month. So this particular site quote helps in providing uh, proof to what has been um, suggested by the writer in this letter. So the writer gives this quote and also states that this is from the Indian Express, dated so and so. Then he goes on again to elaborate and give more information about the air quality in Delhi and why is he concerned. Okay. Now this is what he's doing, giving information in the next, after the introductory paragraph, next three paragraphs. In the fifth and the sixth paragraph, the writer gives us or is suggesting preventive measures. How can we curb such a issue, or how can we address such a issue? How can we contribute in helping decrease air pollution? So he says, building a strong campaign. We need to shift our focus from telling people about what could happen if we don't fix pollution to telling people about what has already happened. So he says the way we address sharing information, disseminating information as to what could happen to what has already happened. This may also make people more aware and help people be more concerned about the issue. So this is how you can write a letter where in a question where you are asked to as is given in your practice exercise as to ways to deal with air pollution, write a letter to Chief Minister. Now, in informal letter, you have been asked to write a letter to your mother, and you have to follow this format. Now, the difference between formal letter and informal letter is, while the formal letter is personal in nature, your formal letter is official in nature. It is impersonal in nature. Your formal letter has to strictly follow the prescribed format. Your format for informal letter is also important, but when we come to the body paragraphs or the body of the letter is comparatively flexible than your formal letter. So this is the format for your informal letter. First comes the address of the person who is writing. You'll leave a line, you'll write the date on which the letter is being written. Then comes the addressal, uh, and finally the closing remark after your body paragraph. Okay, so in formal letter, your usually your if we come to this example, um, your format is that first comes the address of the person who is writing the letter, then comes the date, then comes the address of the person to whom the letter is being written. So address of the writer on the top first, date, address of the person to whom the address is being written third, fourth comes the subject, fifth comes the salutation. Okay, now in your study material there is a example that has been given
which is also important, and I hope you do not get confused as to this example does not give us the address of the person who is writing the letter. Please do not get confused. If you come to the part that has been given just below this particular example, it specifies that when we are doing a formal communication, particularly a communicate in organizational context, usually the letters are written in a paper which already has a letterhead. So this is a letterhead where the page specifies the address and the name of the company in the center of the page. But in your exam, you are not writing in a letterhead. So we can, what we can do is this that has been given to you in the center right here can be shifted to the left. So this, the address of the person who is writing can be shifted to the left. So begin with the left margin, write the person, the writer's address on the left. Then comes, this is optional, reference. If there is a reference number that has been specified in your question, that this, but write a letter with reference number so and so. So you will have to mention that reference number. And where will you mention that reference number? Before the date. Before the date. Then after the date comes the address of the person to whom the letter is being addressed. Then comes the subject of the letter. Then comes the salutation, sir, madam, and finally the body of the letter. I hope there are no there are no doubts about how to write a formal letter and informal letter. If there are, please do write them down in the question Q&A section. आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको लेटर लिखना है। जैसे आपकी अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन था कि चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, तो हमने उसका एग्जाम्पल देखा कि एग्जाम्पल उसका ये हो सकता है कि आप ने लेटर लिखा, जैसे आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्वेश्चन दिया गया है स्टडी मटेरियल में। ये आपका क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में। give me a minute. Analyze, राइट अ लेटर टू द चीफ। सो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है, या आपका क्वेश्चन लेटर टू एडिटर भी आ सकता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका फॉर्मल लेटर से आ सकता है, जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट। आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है सो एंड यू हैव टू कंप्लेन अबाउट लेट्स से सो एंड सो। तो इस तरीके के बिजनेस लेटर में फॉर्मेट हर फॉर्मल लेटर का सेम रहेगा। सबसे पहले एड्रेस किसका आएगा? आपका आएगा जो लिख रहे हैं। उसके बाद आएगी आपकी डेट। उसके बाद आएगी आपकी जिनको आप एड्रेस, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस आएगा थर्ड नंबर पे। इन सब के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है। अगर आपके क्वेश्चन में रेफरेंस नंबर भी दिया गया है तो डेट से पहले आपका वो रेफरेंस नंबर आएगा, जिस तरीके का एग्जाम्पल आपको इस स्टडी मटेरियल में दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, इससे पहले आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पर भी आ सकता है। ओके। तो आपके एग्जाम में कंप्लेंट लेटर के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी के फॉर्म में आपका आ सकता है फॉर्मल लेटर, आपका टू राइट अ लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल, इस तरीके का लेटर आ सकता है। इसके साथ आपका आ सकता है लेटर टू द एडिटर।
तो आपको लेटर टू द एडिटर में क्या करना है, आपने अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, एडिटर लिखा, जिस पेपर है उसका नाम लिखा, कहाँ पे है जगह उनका एड्रेस लिखा, देन सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने ये लेटर लिखा। जैसे लेटर टू द एडिटर का एक ओपन लेटर्स जो होते हैं, खासकर वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेटर टू द एडिटर का। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स में आपका लेटर छपा है, दिस लेटर इज एन ओपन लेटर ऑन पोल्यूशन टू द पार्लियामेंटेरियंस। एंड इस तरीके का ओपन लेटर, लेटर टू द एडिटर, यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं, ये जब छप गया है, प्रिंट हो गया है, तो इस फॉर्मेट में हुआ है, पर जब आप उन्हें लेटर लिख रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा कि आपने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने डेट लिखी, उसके बाद आपने जिस भी पेपर को, जैसे उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को लिखा है तो इकोनॉमिक टाइम्स का आपने एड्रेस दिया, उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट दिया लेटर का, सब्जेक्ट देने के बाद आपने अपना सैल्यूटेशन उन्हें दिया, और एंड फाइनली जैसे यहाँ पे सैल्यूटेशन में आप देखेंगे दिया गया है, डियर आरटी ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पोल्यूशन। और उसके बाद आप, जैसे हमने इससे पहले ये एग्जाम्पल देखा था, तो इस तरीके के लेटर में उन्होंने क्या किया, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज किए हैं। तो आपने ये जब लेटर लिखा, इस ये लेटर लिखा, तो इसमें आप, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में बता दिया अपना। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आया आपका, वो किसी भी फॉर्मल लेटर में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, आपके पर्पस को स्पेसिफाई करता है, चाहे वो कोई भी कंप्लेंट का हो, इंक्वायरी का हो, एडिटर का हो, रिक्वेस्ट का हो, कोई भी लेटर हो। सबसे पहला आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा वो क्या करेगा, आपका स्पेसिफिक पर्पस बताएगा कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है। देन कम्स आपका इस तरीके का फॉर्मेट भी हो सकता है लेटर में, दैट इज पोल्यूशन द ग्रेट लेवल। इस उन्होंने इसे डिवाइड कर दिया है सब हेडिंग्स में, इस तरीके के सब हेडिंग्स में उन्होंने इसे डिवाइड कर दिया है, तो आप इस तरीके में भी डिवाइड कर सकते हैं अपने लेटर को। ओके, I hope this answers your questions as to what questions could be asked. तो आपकी informal letter में आपको write a letter to your friend, to your mother, to your classmate, इस तरीके का question आ सकता है। आपका नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग से फीचर्स पे क्वेश्चन आना के चांसेस कंपैरेटिवली कम हैं देन डायरेक्ट क्वेश्चंस के। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है कि इसके बेसिस पे आप नोट बनाइए, इसके बेसिस पे आप नोट बनाइए। तो इस तरीके के आने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल राइट है, दिस पैराग्राफ दैट हैज बीन गिवन टू यू इन पेज नंबर 59 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, प्लीज मेक नोट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको पैराफ्रेजिंग के लिए भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उन्हें आपसे वो कहेंगे कि प्लीज इसे पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज कीजिए। आपको लेटर है, नोट मेकिंग है आपका, या फिर आपका पैराफ्रेजिंग है, आप बॉक्स बना लें तो ज्यादा अच्छा है, वो क्लीन लगता है, आपका काम क्लैरिटी रहती है काम में। और इट्स बेटर, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप मार्जिन का जो रूल है फॉर्मेट का वो फॉलो करें। um, आप लेटर को लिख सकते हैं बॉक्स में अगर आप चाहें, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं। आपके साथ लिंक मैं गूगल क्लासरूम का शेयर कर दूंगी। मैंने पिछली क्लास में भी शेयर किया था, देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आपको कितने पेजेस के आंसर्स लिखने होते हैं, आपको जो भी आंसर है
जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है आपको उतना लंबा आंसर लिखना है। अगर पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन है तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि for a paragraph that you have been asked to paraphrase, you have to keep in mind that the main idea, supporting idea, and the examples, all of them will be paraphrased. You'll change the words, you may change the order, but all of them have to be mentioned in the work that is being paraphrased. लेकिन अगर उसी काम की आपको समरी करने को कहा जाए तो आप समरी कैसे लिखते हैं? सिर्फ मेन आइडिया बताते हैं, तो उसकी लेंथ शॉर्ट होती है। लेटर है आपका, फॉर्मल लेटर बहुत लंबा नहीं होता है, ना ही आपका इनफॉर्मल लेटर एग्जाम के पर्पज से आप 5 to 10 पैराग्राफ्स का लिखना अवॉइड कीजिए। आप उसे शॉर्ट कीजिए, क्लियर रखिए, लेकिन अपनी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो आपको क्लियरली उसका आंसर आपका, चाहे लेटर फॉर्मेट में आप दे रहे हैं, राइटिंग स्किल्स में में दे रहे हैं, जिस भी फॉर्मेट में आपको, ऐसे के फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना होगा। आई एम शेयरिंग द पीपीटी विद यू। सो इनफॉर्मल लेटर का मैंने आपको एग्जाम्पल वहां पे का फॉर्मेट दे दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में पूछा गया है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आया सो स्टिल यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपका जो सैल्यूटेशन है वो बाद में आता है, आपका सब्जेक्ट पहले आता है। आपका मटेरियल मैंने अपलोड कर, स्टडी मटेरियल आपको एसओएल की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, एंड स्टडी मटेरियल आई हैव आल्सो अपलोडेड, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन, आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू। So I guess there are no more questions related to the ये आपका letter writing. Now we'll come to report writing. Okay, since you have been asked question in this exercise on report writing, let us quickly cover it. But before I come to report writing, in your syllabus, if we come to the syllabus, you have been ये आपका syllabus है, तो आपके syllabus में आपको ऐसे writing दिया गया है। The screen is cleared. ये ऐसे writing आपके syllabus में है, unit 3 में. So let's come to essay writing before we move ahead with your. So what are the types of writings that we have? This is the book I am following, and the types of writing that we have is descriptive writing, narrative writing, expository writing, and argumentative writing. तो आपका जो ऐसे है ये चारों फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ये चार टाइप के फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं अपने, या चार टाइप ऑफ, जो ये चार वे काइंड्स ऑफ राइटिंग दी गई हैं, ये चारों स्टाइल में आप, राइटिंग स्टाइल में आप अपना ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रेफर्स टू अ काइंड ऑफ राइटिंग वेयर वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, अ प्लेस, अ प्रोसेस और अ थिंग. So what is descriptive writing? Descriptive writing refers to a kind of writing where we are simply describing. तो हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। हम किसी चीज के बारे में जब बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं उस पे, मतलब हम उसका बताने का स्टाइल क्या है कि हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी फीचर्स बता रहे हैं, जैसे पर्सन, प्लेस, प्रोसेस, तो इसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जिस जिस तरीके का कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि वो जगह कैसी है, या वो ऑब्जेक्ट कैसा है, या उस चीज का प्रोसेस क्या है, या वो पर्सन कैसा है। तो ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आप देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
from Charles Dickens' Hard Times. He was a rich man, banker, merchant, manufacturer, and whatnot. A big man, a big loud man with a stare and a metallic laugh. तो ये क्या हुआ आपका डिस्क्रिप्शन? ये क्या है आपका डिस्क्रिप्शन? आपने उस व्यक्ति के बारे में क्या किया है? डिस्क्राइब किया है उसे कि अ रिच मैन, अ बिग मैन, अ लाउड मैन विद अ मेटालिक लाफ. तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. There are certain features of descriptive writing. Descriptive writing should include sensory details. Sensory details से हमारा मतलब है जो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो भी आपके 5 सेंसेस हैं उसके हिसाब से जो आपका आपने उस चीज के बारे में समझा विद द हेल्प ऑफ योर 5 सेंसेस, देख के, सुन के, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स. जैसे कि मेटालिक लाफ, फॉर एग्जाम्पल मेटालिक लाफ, फॉर एग्जाम्पल बिग लाउड मैन, राइट. तो ये आपका क्या है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. देन यू कैन यूज फिगरेटिव लैंग्वेज इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. तो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप सिमिलीज, मेटाफर्स, एनालॉजीज मतलब कंपैरिजंस, इनका आप यूज कर सकते हैं. जैसे यही एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, इसमें द मैन हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड हैज आल्सो बीन कंपेयर्ड टू एन इन्फ्लेटेड बलून. Precision is the key, and descriptive writing should be precise. So you should use general adjectives, nouns, and passive verbs um, uh, to describe. You can use specific nouns, you can use strong action verbs. You shouldn't use passive verbs. So आपको passive verbs का use नहीं करना है, आपको general adjectives को avoid करना चाहिए. We should rather use specific adjectives, specific nouns, strong action verbs. Then comes your narrative writing. Narrative writing is a type of writing जहाँ पर you are telling something, जहाँ पे आप you are primarily telling a story. This is narrating. Narrating is not describing. आप सिर्फ describe नहीं कर रहे simply कि incident में क्या क्या हुआ, पर आप उसे narrate भी कर रहे हैं from a particular point of view कि point A looks like this, but point A is standing here, and this why is he standing here, for how long he is standing here. ये सारे डिटेल भी आप नैरेटिव राइटिंग में इंक्लूड करते हैं. तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग का फर्क है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपने क्या किया? सिंपली ये बताया कि ये पर्सन है, ऐसा दिखता है, ऐसी उसकी आवाज सुनाई देती है. लेकिन नैरेटिव राइटिंग में आप क्या कर रहे हैं? ये पर्सन ऐसा दिखता है और उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो पर्सन कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है, या कहाँ पे है, क्यों है, कितने समय. सो ये सारे डिटेल्स भी आप इंक्लूड करते हैं. इट इज from a point of view. What is narrative? From primarily telling a story from a particular point of view. Okay. Then comes expository writing. Expository writing क्या होती है? Expository writing is a type of writing where you are explaining. Where you are explaining. तो आप explain कैसे कर सकते हैं? आप define करेंगे, आप classify करेंगे, आप compare and contrast करेंगे. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? cause and effect बताएंगे, how to बताएंगे. ये क्या है आपका expository राइटिंग. तो आपने एक स्टोरी बताई, आपने एक स्टोरी में बताया कि यहाँ पे हैं, इतने समय से हैं, ये है और ऐसे दिखते हैं. उसपे आपने अगर ये डिटेल ऐड किया कि उन ये ऐसा किया था तो ऐसा हो रहा है, सॉर्ट ऑफ या फिर डिफाइन किया आपने कि क्या मतलब है. let's say for example there is this reality shows on Indian television industry, and this is also how you write your expository essays. तो essays भी आप इसी ढंग से लिखते हैं. आप descriptive essays भी लिख सकते हैं, आप narrative essays भी लिख सकते हैं, आप expository essays भी लिख सकते हैं.
तो जैसे आपने ऐसे में सबसे पहले क्या किया, आपने अपनी हेडिंग दी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऐसे, इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री हैज सीन इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ रियलिटी शोज इन द recent times because of various reasons, the primary one being the emotional quotient of these shows। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने क्या एक्सप्लेन किया अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, हमने जो इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कोई भी राइटिंग हो उसमें क्या होता है, आपका पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मेन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइडेड होता है। उसी तरीके से एक पैराग्राफ में जो आपका सबसे पहला लाइन है वो क्या है, टॉपिक सेंटेंस, फिर क्या है सपोर्टिंग सेंटेंस। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसी पैराग्राफ की मदद से अगर हम देखें तो उन्होंने हमें पहले पैराग्राफ में बता दिया है कि वो किस चीज के बारे में बात करेंगे, द राइज ऑफ और द इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ रियलिटी शोज इन इंडिया। और ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस भी है, राइट। देन कम्स द supporting sentences. Now the supporting sentences are the sentences, introductory paragraph के बारे में जब हम खासकर we focus on introductory paragraph, जिन themes पे आप बात करेंगे अपने एसेज में। तो यहाँ पर वो बात करेंगे प्रॉफिट मेकिंग शोज हैं, एंटरटेनमेंट का बिजनेस क्या है। तो अब जब हम आगे ये ऐसे को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस क्यों है, उसका क्या इमोशनल कोशेंट है, जो इमोशनल अपील के बारे में उन्होंने तीन चीजों के बारे में बात करी, इमोशनल अपील, शो बिजनेस, और क्या बोला है उन्होंने कि अनदर एंटरटेनमेंट। सो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। तो ये जो तीन चीजों के बारे में उन्होंने बात करी है, आगे के जो पैराग्राफ्स हैं वो इन्हीं तीन चीजों पे हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, आपका टॉपिक सेंटेंस बताता है कि किस चीज के बारे में, थीसिस ऑफ योर ऐसे, कि मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। देन आपके जो सपोर्टिंग सेंटेंस है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के, वहां पे आप क्या दे रहे हैं, थीम्स दे रहे हैं कि इन्होंने जैसे थीम्स दी हैं, इमोशनल अपील के बारे में ये बात करेंगे कि क्यों पॉपुलैरिटी इमोशनल अपील से कैसे जुड़ी हुई है, प्रॉफिट मेकिंग से कैसे ये पॉपुलैरिटी जुड़ी हुई है, ये पॉपुलैरिटी एंटरटेनमेंट से कैसे जुड़ी हुई है। सो आगे के पैराग्राफ्स में दिस इज व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोजिटरी ऐसे, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम एक्सप्लेन कैसे कैसे कर सकते हैं, डिफाइन करके, क्लासिफाई करके, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके, कॉज एंड इफेक्ट बता के, हाउ टू एसेस। इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग इज परसुएसिव राइटिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर you carefully develop a particular argument and till the end of the essay you support that particular, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिबेट्स में, तो डिबेट्स में हम क्या करते हैं, आपने फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन अपनी डिबेट प्रिपेयर करी, अगर आप फॉर द मोशन है टिल द एंड आपका फॉर द मोशन डिबेट का पूरा सीक्वेंस रहता है, एग्जाम्पल्स उसी से रिलेटेड होते हैं, आपके कोट्स उसी से रिलेटेड होते हैं, ऑल द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट इज रिलेटेड टू दैट। तो इस तरीके का ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे शुड, ये एक अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन ऐसे ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिट, तो ये ऐसे में भी आप किसी भी ऐसे में, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो नैरेटिव ऐसेज हो या वो आर्गुमेंटेटिव एक्सपोजिटरी, किसी भी तरीके के स्टाइल में आप ऐसे लिख रहे हैं, ये जो चार तरीके की हमारे काइंड्स हैं ऑफ राइटिंग, your introductory paragraph, main body and your conclusion is going to follow the same rule that we have been discussing again and again, that the topic sentence, supporting sentence, conclusion. And if we look at the paragraph as a part of the whole work, the introductory paragraph, the introductory paragraph, the main body and the conclusion. Okay. Now finally coming to report writing, क्योंकि आपके कुछ questions आपके study material में report writing पे भी हैं। I hope this is clear. तो report writing आपका जो है, report writing is divided into letter format and memo format. Letter format क्या होता है? Letter format is a format that uses that is for the purpose of
इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आपका मेमो फॉर्मेट क्या होता है? यूजुअली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके लेटर फॉर्मेट में आपका सबसे पहले आता है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका एड्रेस, रेफरेंस नंबर, उसके बाद आता है, डेट, उसके बाद आता है रिसीवर्स नेम, जॉब टाइटल, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन टेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर। ये एग्जाम्पल है आपके लेटर फॉर्मेट का। आपने सबसे पहले क्या लिखा? रेफरेंस, आपका एड्रेस, यहाँ पर भी जो बीच में एड्रेस दिया गया है, आप देख सकते हैं PQR कॉलेज, ये जो बीच में एड्रेस दिया है, इन योर एग्जामिनेशन दिस कैन बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट मार्जिन। उसके बाद आपने जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो किया वो ही फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स योर, फॉर एग्जाम्पल आपका एक आपको जो एग्जाम आपके स्टडी मटेरियल में देयर इज अ क्वेश्चन। So in your study material, there is a question. This is the question that has been given to you. The question is, as a student or as a president of the students union of your college, write a report. तो ये इस तरीके से आप उस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका यही रहेगा। क्या है फॉर्मेट? सबसे पहले रिपोर्टर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेफरेंस नंबर, डेट, ये ऑप्शनल होता है। अगर रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया है तो आपको मेंशन नहीं करना है। डेट, रिसीवर्स नेम, सैल्यूटेशन, फिर आता है सब्जेक्ट, मेन टेक्स्ट। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है उसको आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो, एंड देन dividing it firstly, secondly, thirdly, at last. Now comes the second type of question that might be given to you, has been asked in your study material related to report writing. But before we move to this question, let us look at the second format, क्योंकि दो फॉर्मेट होते हैं आपके रिपोर्ट के, लेटर फॉर्मेट और मेमो फॉर्मेट। अभी हमने लेटर फॉर्मेट के बारे में बात करी, ये उसका फॉर्मेट है। सेकंड आता है आपका मेमो फॉर्मेट। मेमो फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहले आती है आपकी हेडिंग, नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेबल, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, ये ऑप्शनल होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या होता है मेमो फॉर्मेट? मेमो फॉर्मेट इज a memorandum. It is a memo. A memo is a brief note. It is a written statement, record, or communication that is used for internal communication. तो सबसे पहले क्या आता है आपका? नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेबल, इंटर ऑफिस, ये ऑप्शनल है। रेफरेंस नंबर भी ऑप्शनल है। उसके बाद क्या आता है आपका? डेट, नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट, हेडिंग, नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट। टू, आपको यहाँ पे टू लिखना होता है rather देन एड्रेस। टू, जिसको आप भेज रहे हैं। फ्रॉम, सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेमो फॉर्मेट। You are the president of the debating club of your college. The club recently organized an intra-college debate competition. You are to you are to submit a report to the principal on the इवेंट। तो आपने क्या किया? जो आपको क्वेश्चन एग्जाम यहाँ पर भी पूछा गया है कि एज अ स्टू प्रेसिडेंट सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट, तो आप ये लेटर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मेमो फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या लिखा? हेडिंग, जो बीच में आई। उसके बाद ये ऑप्शनल है, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। उसके बाद आता है आपका डेट, देन कम्स टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट एंड द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ द फील्ड विजिट टू द फैक्ट्री। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट होती है, फील्ड विजिट रिपोर्ट है, तो उसको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसको आप इस सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टेट विजिट आउटलाइन, साइट विजिट आउटलाइन, पॉइंट्स टू नोट, कंक्लूजन। इसको आप मेमो और लेटर फॉर्मेट दोनों में लिख सकते हैं। देन कम्स आपको
ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपको आया है एक्सरसाइज में, दैट इज टू मेक नोट्स. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. प्लीज डू go through this paragraph and try to solve it on your own. You simply have to make notes after reading this paragraph. Let's come to the second paragraph that has been given, that is Chief Settle's letter. In 1855, the Native American Chief Settle of the Suwamish people wrote a letter to the President of the United States of America in response to the President's demand to forcibly buy the tribal land. How can you buy or sell the sky, the warmth of land? The idea is strange to us. We do not own the freshness of the air or the sparkle of the water. How can you buy them from us? Every part of this earth is sacred to many people. Every shining needle, every sandy shore, every mist in the dark woods. Um, the entire letter reads as, ये जो पैराग्राफ है आपका इस लेटर में, he talks about कि what is the importance of nature for them. Second letter में the chief writes that why is the earth precious, और इस चीज के क्या हानिकारक परिणाम, जिसे हम बोलते हैं रिपरकशंस, हो सकते हैं इफ this is not stopped in the second paragraph. In the third paragraph, इस यही दो पैराग्राफ में डिवाइड, तो आपके इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है. जैसे इस पैराग्राफ के बेस में उन्होंने बोला है कि पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज कीजिए इन नॉट मोर देन 75 वर्ड्स. अब आपकी लिमिटेशन आपको यहाँ पे दी गई है, चैलेंज आपका है कि 75 वर्ड्स में आपको इसे कंप्लीट करना है. पैराफ्रेजिंग तो हम कैसे करेंगे इस लेटर की पैराफ्रेजिंग, वेयर व्हेन वी नो पैराफ्रेजिंग मींस दैट वी हैव टू इंक्लूड द सपोर्टिंग आइडिया, वी हैव टू इंक्लूड द मेन idea, we have to include the examples. So please keep in view that your supporting idea, main idea should be written in such a way that they are merged together. Also give examples. You can quote, थोड़ा सा आप quote कर सकते हैं कि one of the most important quotes according to you यहाँ से जो है, जो आपके paraphrasing में आपका जो भी आप जिस तरीके से पैराफ्रेज कर रहे हैं उसको क्लियरली अच्छे से वो बात कहेगा. जैसे आपने पैराफ्रेज किया कि चीफ सेडल रोट अ लेटर, the Native American chief Settle wrote a letter. He begins with speaking of the importance of nature or the natural resources for his tribe. He wants the people. He wants the uh, people that if we do not stop with such destruction, it may lead to it may have a harmful impact. Or and you can quote this, that this earth is precious to him, our God is one. And I may quote this, or I may quote this: continue to contaminate the your bed and you will one night suffocate in your. So we can quote भी हम कर सकते हैं. Then comes the third question. Expository writing calls for logical analysis. Right, we just studied expository writing. Using chief's letter, write a expository essay. Can you write an expository essay? Can you please suggest me a few topics based on this